Hi guys, welcome back to my channel. I am Priyanka and I post a lot of lifestyle related content here on YouTube as well as on Instagram. So on YouTube I have recently started vlogging. I wanted to start vlogging for the longest time, but I just couldn't muster the courage to do that. I don't know for what joy. But I think finally I have decided that I want to pursue this and go ahead with this because I put out a poll on my Instagram as well, and a lot of my followers said yes, they would want to see daily sort of vlogs. I do post a lot of mini vlogs, but I wanted to start like long form content as well for the longest time. So I think this is the best time to do that, and I'm really happy I have taken the plunge to do that. I am currently 9 months pregnant and I am expecting to have my little one any day now. So join me along as I take you on my journey. I am going to share everyday life with you. I'm going to also share travel content with you, beauty, lifestyle, and fashion related content as and when I do post those things. Keep on watching. Hi guys, good morning. So it's a slow morning today. Today is a Monday and अभी मैं थोड़ी देर पहले ही उठी बिकॉज आई जस्ट कुडंट स्लीप ऑल नाइट लास्ट नाइट. तो आई एम जस्ट हैविंग माई ब्रेकफास्ट. आई एम जस्ट हैविंग सम भुर्जी एंड पराठा फॉर ब्रेकफास्ट एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ चिल डे टुडे. आज मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, सो अगर वो कैंसिल नहीं करती है तो आई हैव टू गो टू माई डॉक्टर. एंड आई हैव नथिंग प्लान्ड एज सच फॉर टुडे बिकॉज एज यू ऑल नो, हैव आई टोल्ड दिस, मैंने बताया है नहीं बताया, आई डोंट नो. I am on my maternity leave right now, so I am just taking it easy, chilling, being at home. So I have nothing planned as such for the day, but let's see how the day goes. I will take you along with me throughout the day, and this vlog I'm thinking it's going to be accumulation of a couple of days in my life, because ऐसे तो कोई खास इंटरेस्टिंग चीज़ें हो नहीं रही है एक दिन में करने लायक. So I thought कि मैं 2-3 या for a week I will just vlog and I'll just kind of take you along with me. I'm just quickly going to have my breakfast, have my chai, and just move on with the day. Hey guys, what's up? Checking in after a few hours. So basically मैं ready हो चुकी हूँ, मतलब face बाकी है, मैं नहा चुकी हूँ एक्चुअली. अभी हम जस्ट गेटिंग रेडी. डॉक्टर के पास जाना है. अभी 3 बजे की अपॉइंटमेंट है. इट नियर बाई ओनली, इट्स लाइक 5 minutes अवे. इट्स लाइक 2:30 PM राइट नाउ, एंड दिस इज़ अ रियली स्पेशल अपॉइंटमेंट. स्पेशल एज इन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, बिकॉज आज काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है कि what is the plan, like what's going to happen. And I also have a certain questions in mind regarding birth etc. So वो भी मुझे एड्रेस करना है, वो भी मुझे पूछने हैं डॉक्टर से. सो दिस आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस अपॉइंटमेंट बिकॉज टुडे आई कंप्लीट 36 weeks and I have officially entered in my 37th week. So any day now, so that is the reason I have to be like extremely prepared with everything. Although I have packed my hospital bags and baby's bag and everything, वो सब कुछ ready रखा है मैंने. But otherwise also I have to like ensure that other things are in place in terms of knowledge. जो वीडियोज़ में मैंने देखा है उतना सब कुछ मुझे पता है, but otherwise also I need to know a lot of stuff from my doctor. So let's see. Very excited about this appointment actually. Heading to the doctor. Six and a half hours later. और यहाँ चल रही है टेडी की ग्रूमिंग. हमने ये सिज़र ऑर्डर की थी अमेज़ॉन से बिकॉज हिज फेस वॉज लाइक हिज आइज़ वर नॉट विजिबल एट ऑल. तो वी थॉट कि पूरा का पूरा, मैंने दोपहर को बताया था शायद आप लोगों को, आई डोंट नो, but we wanted to kind of give him a quick trim so that his at least visibility is okay, and also his paws, under paws के यहाँ पर थोड़े से hair है जो outgrown है, like overgrown है. So he's just trying to do that, and he's first time he's patiently getting it cut. So cute. Tedu.
Chenu. Give me another. He looks so cute. I did his face, by the way. Before Pocahontas brutally murdered. Hi guys, what's up? It's after some time. It's in the evening. I feel like मैं सिर्फ खाने का ही vlog कर रही हूँ because honestly कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए. So here's what I am eating right now. I had lunch, but actually मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा. पता नहीं मुझे ऐसा लगा नहीं जैसे मैंने लंच किया. So I'm just having some khari biscuit and दूध. Let me show you what I'm eating quickly. And I think I'm just going to chill और कुछ नहीं करने वाली हूँ मैं. Hi guys, what's up? I don't even know मैंने last vlog कहाँ end किया था. Probably कल शाम को I think I spoke to you guys about something. So today is the next day. Today is a Wednesday and it's around afternoon time. I was in a rut since morning and इतना ज़्यादा mood swings हो रहा था मुझे and I was feeling so out of it since morning. I mean I was at my pregnancy का हार्मोन्स का पीक बिकॉज आई वॉज फीलिंग लाइक क्राइंग. आई क्राइड ऑल्सो. एक सेशन हो गया रो के एंड इट वॉज इट टर्न आउट टू बी सो फनी लेटर. बट उस टाइम पे ऐसे लग रहा था देयर इज़ नो वे आउट ऑफ इट. इट्स अ ब्लेसिंग ऑब्वियसली, बट ऑनेस्टली ऐसे कभी कभी ना यू कांट कंट्रोल योर इमोशन सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो जाता है. सो दैट्स वॉट हैपेंड विद मी एंड आई वॉज फीलिंग सो लेजी एंड आई वॉज लाइक कि मुझे व्लॉग नहीं करना, मुझे कुछ भी नहीं करना. आई जस्ट वॉन्टेड टू सिट बट देन आई हैड टू पिक माई सेल्फ अप. सो आई थॉट कि मुझे हेयर वॉश भी करना है. सो माइट एज वेल गो टेक अ शावर, वॉश माई हेयर सो आई फील अ लिटिल रिफ्रेश्ड, put on some new PJs. So that's what I did and it really helped pata hai, because there's nobody who's going to pick you up and you will have to do it for yourself. As a part of self love you will have to pick yourself up and dust yourself off and kind of get into doing things. So that's what I did, but obviously listening to my body because I get so tired so easily these days and because obviously I am in my 37th week, so this is like the last stretch of my pregnancy. Finally I'm in the kitchen. कल रात का थोड़ा सा चावल और दाल बचा था, सो आई एम गोइंग टू हीट दैट अप. मैंने दाल बनाई थी कल बाय द वे बिकॉज इवनिंग में दीदी नहीं आई थी खाने वाली. लंच में आज बनी है मेथी की सब्जी एंड रोटी. Also guys, we are like DB is editing the thumbnail for my first vlog. This is so exciting. I have only seen people doing this. Thumbnails and all that. This is like quite strange for me. This feeling. But I'm so glad. By the way, DB is a graphic designer by profession. So I have an in-house team, so to say. By the way, vlog भी उसी ने edit किया है first वाला and I think he's done such a fab job. बहुत सारे arguments हुए थे. That's why he's giving me that look. I think this is turning out really cute. What do you guys think? Let me know in the comments. But तब तक तो आप देख चुके होंगे ये. So whatever feedback you have, leave it in this vlog का comments. Checking back again. I am done with my lunch और अभी मैं शूट के लिए रेडी हो रही हूँ. बेसिकली जस्ट थोड़ा सा ड्राइंग आउट माई हेयर एंड थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग भी कर ही लूँगी. नाउ फॉर माई हेयर आई एम जस्ट गोइंग टू सिर्फ ये वेवीनेस हटाने के लिए मैं थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटन करने वाली हूँ, लाइक नॉट मच. चलो, getting ready for our evening walk and we are out. It's a very beautiful evening. बहुत ही प्यारा सनसेट हो रहा है वहाँ पर. वाव. हेलो चलो. Our freshly serviced car. So happy to be finally out of the house. I think आज विसर्जन है 5 days वाला. Okay, so I was saying I'm finally so happy to be out of the house. We were taking it very slow because सब लोग एक सेकेंड.
तो सब लोग बोल रहे थे लाइक स्पेशली माई मॉम एंड ऑल दैट कि 8th मंथ में इट्स क्वाइट लाइक रिस्की अगर वो करते हैं तो ट्रैवल करते हैं एंड ऑल दैट, एंड जनरली वी डिड नॉट वांट टू टेक एनी चांस, सो दैट इज़ वाई हमने कम्प्लीटली ट्रैवल अवॉइड किया था. लाइक आई डिड नॉट ट्रैवल. So guys, this building that you see is our dream building. It's really nice and इसके सामने exactly I think garden है, garden view है. We really wanted to get a flat in this building, but it has 3 BHK. Even this one is really nice. So hopefully someday manifesting it to happen very soon. वी जस्ट वोक अप. आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं हम लोग बिकॉज आई जस्ट कांट स्लीप दीज डेज लाइक आई जस्ट कांट स्लीप दीज डेज. सो आज भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए. दीदी आके गए. शी मेड जीरा वाटर, नाश्ता, एवरीथिंग. सो लास्ट नाइट आई थिंक आई फॉरगॉट टू व्लॉग दिस, बट आई मेड दाल ढोकली फॉर डिनर एंड हम लोग उसके साथ वो स्पाइसी वाली रोटी भी बनाते हैं. सो दैट इज़ लेफ्ट कल रात का. तो वी आर गोइंग टू हैव दैट फॉर आवर ब्रेकफास्ट एंड आई एम क्विकली गोइंग टू गो टेक माई मेडिसिन एंड हैव जीरा पानी, and that's how I'm going to start my morning, and hopefully I will take you along today also on the day having my breakfast. Finally, it's like it's super late today. It's like 12 p.m. right now. I have a call with my care manager. So basically मैंने गर्भ संस्कार का I had taken a subscription and they provide you with a care manager and a dietitian and all that. तो मेरा अभी कॉल है 10 minutes में. So ऐसा कोई खास कॉल तो है नहीं, it's just a follow up call, but I have to like quickly get done with my breakfast and like quickly attend that call, because as I am nearing the sort of due date, so I need to be prepared and I need to know as much as I can about everything related to birth and pregnancy and all that. So it's about that only. So quite excited for that call, honestly. Yeah, so I will be attending that, quickly finishing my breakfast, and I'll catch up with you guys later. Oh my god, I just wanted to update you guys on the call that I had with my care manager. Conversation that I had with my care manager was very nice, and she also told me that I am full term now and I can expect like any time after this the baby pops out, it's completely fine. Here she is going to be completely safe, touch wood, and everything looks fine and everything looks great. So she's told me to do some exercises and I'm going to start doing them today to kind of help with the labor or induce labor naturally. I am so very happy because pregnancy is such a long journey, I tell you, and sometimes it gets lonely and daunting also, like I was telling you yesterday. So बहुत खुश हुई मैं वो सब सुन के, and I am going to start my preps today. Starting today, preps as in थोड़े बहुत squats and duck walk and drinking certain kinds of teas and having papaya and pineapple. Basically जो चीज़ें first 3 months में मना करते हैं, they just tell you to go ahead and do those things in the last phase of your pregnancy. So I'm quite excited to do that and just wanted to jump on here and quickly update on that front. So yeah, looking forward to a baby very soon. I'm just trying out the new earrings जो अभी आए हैं. I think they look good. Let's see. Cute है ना? Oh nice, I think they look cute. Comment down below and tell me how do you like them. I am not used to wearing earrings, so this is a little new for me. First video is scheduled. Yay!
morning. Today is a Friday and it's around 10:30 a.m. अभी मेरे डॉक्टर से बात हुई. So there was an episode that happened last night. So apparently, like I told you guys, I am almost like I will complete my 37 weeks. And yesterday, like last night, there was a little bit of a brown sort of a discharge. Okay, this is TMI. Okay. Yesterday there was a brown sort of a discharge that happened last night. So I actually sent a picture to my doctor and she called me in the morning and she asked me to come in at 12. So that's the plan. मैंने actually कुछ और plan किया था. I had thought of getting vaccine and all done. And मैंने बुक भी किया था अर्बन कंपनी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाएगा. Although I have rescheduled it to 3 PM today. So let's see if we make it back because आज मुझे मेन हॉस्पिटल जाना पड़ेगा. I think the last time that I showed you was in my complex itself, like AIIMS as a medical center in my complex itself. But आज मुझे जाना पड़ेगा कहीं और, like which is the main hospital, which is a little bit far from where I live. So आने जाने में मुझे half an hour लग जाएगा easily given the traffic and everything. So let's see, that's the update as of now. सो मैंने अभी जीरा पानी बनाया फॉर माई सेल्फ एंड दीदी, सो दैट दीदी आएंगी तो लाइक खाने वाली दीदी आएंगी तो शी कैन डायरेक्टली मेक ब्रेकफास्ट फॉर अस एंड वी कैन क्विकली हैव द ब्रेकफास्ट एंड जस्ट लीव. एंड देन लंच का आई एम थिंकिंग देयर इज़ अ नाइस साउथ इंडियन प्लेस जहाँ हम लोग खाते हैं यूजुअली एंड इट्स रियली नाइस. बहुत यमी फूड बनाते हैं वो लोग, तो आई विल आस्क बीबी इफ़ वी कैन गो देयर फॉर लंच. So that's the update for now, and I will take you along with me as I go to the hospital. Perhaps if I can give you any updates also, I will let you know definitely in the later half of the evening or in the afternoon today. So yeah, let's carry on with our day. Let's go. Lucky. Hi. है ना, हर किसी को वही करना है अभी. पैसे दे तो बस. हाँ मतलब वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि हमने कार सर्विसिंग में दी थी, मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था. तो ही हैज़ नॉट डन अ गुड जॉब ऑन द कार इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग. या उसने, मुझे तो लग रहा है उसने कुछ भी नहीं किया है ऑनेस्टली, ऊपर से सिर्फ कुछ किया है. एंड वी वेंट विद अ वेरी रिनाउंड सर्विस एक्चुअली. गो मैकेनिक में दिया था हमने कार, एंड फिर उसने हमको बोला कि देयर इज more work that needs to be done, and apparently it was going to cost us somewhere around 17K or something additional 17K on top of what we have already paid. तो वी वाले हमने मना कर दिया कि हमको नहीं करना है करके. तो पता नहीं उस चक्कर में उसने ऐसा किया है काम या पता नहीं. बेसिक स्टफ भी नहीं किया. हाँ मतलब बेसिक क्लीनिंग एंड बेसिक क्लीनिंग तो किया ही नहीं है. स्टेन सारे ऐसे ही है. आई डोंट नो, मतलब हम जस्ट वही डिस्कस कर रहे थे कि लाइक व्हाई आर पीपल बिहाइंड यू नो ओनली स्कैमिंग दीज डेज. सिर्फ स्कैम ही चल रहा है यार सब जगह पे. मतलब इन द पास्ट 1 year हमारे साथ तो इतने बार हुआ है ना, वी कांट इवन टेल. आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है या नहीं, बट मतलब बोलते हैं ना घोर कलयुग, it's like that. मतलब we do our work so sincerely and people are not doing even their main work sincerely. We are done with the doctor appointment and we are going back home. We are done. Hi guys, catching up after some time. Abhi we are going to have some cold coffee. We were really craving some cold coffee because बहुत टाइम हो गया अच्छी वाली कोल्ड कॉफ़ी नहीं पी है. हमने पेट्रोल भी फिल करवाया गाड़ी में. एंड नाउ देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड कैफीन बार जो हमको बहुत पसंद है. दे मेक रियली नाइस कॉफ़ी, आई मीन, एंड इट्स क्वाइट अफोर्डेबल ऑल्सो. बोबा कॉफ़ी करें क्या ऑर्डर?
बाय द वे संडे को मेरी मॉम आ रही है यहाँ पर रहने के लिए हमारे साथ, बिकॉज नाउ दैट माई ड्यू डेट इज़ नियरिंग, anything is expected at any point, so we just want to be prepared beforehand and we want to set her schedule as well, यहीं से हमारे घर से. So yeah, so that's going to happen over the weekend. So yeah, that's about it. And if you like our videos, please subscribe to my channel and share it as well, जिसको आपको लगता है अच्छा लगेगा ये देखने में. And do leave your comments as well. What do you think you like the best about these videos? I would love to hear from you guys and would love to talk to you guys as well. So I'll see you in the next one. Thanks for watching. Bye.